गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पैंडेमिक एग्रीमेंट। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेंबर स्टेट्स जो हैं WHO के, उन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट की है वर्ल्ड की फर्स्ट पैंडेमिक एग्रीमेंट 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मौके पर। तो ये हिस्टोरिक डिसीजन जो है वो 3 साल के नेगोशिएशंस के बाद लिया गया है। ये एग्रीमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग होगा और स्ट्रेंथन करेगा ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस और इक्विटी फ्यूचर पैंडेमिक्स को हैंडल करने के लिए। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पहले हम देखते हैं क्या है। डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। इसमें सभी डेलीगेट जो हैं, जितने भी मेंबर स्टेट्स के, वो सब आते हैं। एनुअली मीट करते हैं ये पॉलिसीज़ को डिटर्मिन करने के लिए, बजट अप्रूव करने के लिए या वर्क प्रोग्राम्स को रिव्यू करने के लिए। जिनीवा में इनका हेडक्वार्टर है और ये WHO की पॉलिसीज़ प्रायोरिटीज सेट करता है, अपॉइंट करता है WHO के डायरेक्टर जनरल को, WHO के बजट को अप्रूवल देना। तो अगर हम इनकी अचीवमेंट्स देखें तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस बनाने में इनका ही बहुत बड़ा रोल है। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया इन्होंने, और कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल जो सबसे पहली इंटरनेशनल हेल्थ ट्रीटी थी 2003 में, वो भी WHA की ही देन है। 2011 में पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क साइन किया। WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट जो भी साइन किया गया है, ये भी एक हिस्टोरिक लीगल एग्रीमेंट है, सेकंड लीगल एग्रीमेंट है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर हम हाइलाइट्स देखें इस पैंडेमिक एग्रीमेंट के, 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जैसे अडॉप्ट किया गया है, और अभी इसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी क्योंकि मई 2026 में इसके की मैकेनिज़म्स को फाइनलाइज़ किया जाएगा और फिर उसके बाद जब 60 कंट्रीज़ इसको रेटिफाई कर देंगी तब ये एनफोर्स हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें, ये ओनली सेकेंड लीगल इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ WHO कॉन्स्टिट्यूशन, और पहला था WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल। ये एक माइलस्टोन है ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस और पैंडेमिक रिजिलियंस में। ये एग्रीमेंट एम करता है स्ट्रेंथन करने को ग्लोबल पैंडेमिक प्रिवेंशन। ये रिस्पेक्ट करता है सोवरन राइट्स ऑफ स्टेट्स ऑल्सो। इसीलिए क्या कहता है ये कि आप अपने नेशनल पैंडेमिक प्रिवेंशन प्लान्स बनाओ, अर्ली डिटेक्शन को इम्प्रूव करो और इन्फेक्शियस डिसीज़ को कंट्रोल करो। फोकस करो की एरियाज़ पर जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन, लैब सेफ्टी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और जूनोटिक डिसीज़ प्रिवेंशन। और इक्विटेबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर जैसे जो डायग्नोस्टिक टूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, और रैपिड स्केल अप करने को कह रहा है ये पैंडेमिक रिलेटेड हेल्थ प्रोडक्ट्स को। सस्टेनेबल, टाइमली और फेयर एक्सेस जो है प्रोडक्ट्स का ड्यूरिंग पैंडेमिक सबको मिलना चाहिए, ये ट्रीटी कहती है। फिर टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफ़र की बात करती है, लाइसेंसिंग, फाइनेंसिंग और रेगुलेटरी इंसेंटिव्स देने की बात करती है। ठीक है, एक न्यू सिस्टम लाया जाएगा जिसमें रैपिड शेयरिंग होगी पैथोजन डेटा की मैन्युफैक्चरर्स के साथ, लेकिन कंडीशन ये होगी कि मैन्युफैक्चरर्स को 20% जो रियल टाइम प्रोडक्शन है अपने वैक्सीन्स की या जो भी मेडिसिन की, वो WHO को देनी होंगी अफोर्डेबल प्राइजेस पर। पार्टिसिपेशन जो है वो ओपन होगी सभी कंपनीज़ को। अब इसके जो मैकेनिज़्म है वो अभी तक बनाया नहीं गया है, मई 2026 में बनाया जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने की भी बात की जा रही है इसमें। अब एग्रीमेंट जो है वो WHO को कोई अथॉरिटी नहीं देता कि वो कैसे इस एग्रीमेंट को वो नेशनल लॉज के ऊपर इम्पोज करेंगे या पैंडेमिक रिस्पांस एक्शंस कैसे वो इम्पोज करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी एनफोर्समेंट पावर नहीं है। ऊपर से US की भी एब्सेंस है इस एग्रीमेंट से, तो ऑफ कोर्स कितना इफेक्टिव रहेगा ये, तो ये भी देखने वाली बात है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी ऑब्जर्वेशन को कि पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट जो है उसमें प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होती है, उसको काउंटर करते हुए पिटिशनर्स जो है वक्फ एक्ट के, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी की वक्फ प्रॉपर्टीज़ को क्रीपिंग एक्विजिशन के लिए बनाया गया है लॉ। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है क्या? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो रिस्पेक्ट फॉर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दिखाता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिखाता है। अब ये क्या कहता है डॉक्ट्रिन कि अगर कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया है, उसको हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करना अगर है किसी को, तो वो जो चैलेंज कर रहे हैं पिटिशनर है, उसके ऊपर वो बर्डन है वो प्रूव करने का। तो एक तरह से इसमें लॉ जो हम आपके लेजिस्लेचर बनाते हैं वो इनहेरेंटली वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल हैं जब तक उनको अगेंस्ट उसके प्रूव ना किया जाए, ये डॉक्ट्रिन कहती है। इसके थ्रू क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स मेंटेन हो पाती है, वरना अदरवाइज जुडिशरी जो है वो तो हर लॉ को क्वेश्चन करने लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसको कई बार अपनी रूलिंग्स में अंडरलाइन किया है और कहा है कि इसके थ्रू जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो रिस्पेक्टेड रहता है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी रिकग्निशन मिलती है।
तो इस प्रिजम्पशन में स्टेबिलिटी भी आती है, प्रेडिक्टिबिलिटी भी आती है लीगल सिस्टम में, और अगर नहीं होगा ये वाला डॉक्ट्रिन तो जुडिशल इंटरफेरेंस हर लेजिस्लेटिव मैटर में होने लगेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इरूला ट्राइब। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के कुनापट्टू में इरूला फैमिलीज़ जो कि कई सालों से जनरेशन से वहाँ रह रही हैं, वो एविक्शन और डिनाइल ऑफ राइट्स फेस कर रही हैं। तो इरूला ट्राइब जो है द्रविडियन एथनिक ग्रुप है, नीलगिरी माउंटेन्स और वेस्टर्न घाट्स में ये रहती हैं, तमिलनाडु और केरला में। इंडिया के ओल्डेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, पीबीटीजी की कैटेगरी मिली हुई है इन्हें तमिलनाडु में। कोई इनका डेफिनेट गॉड नहीं है, पैंथिस हैं ये, बेसिकली स्पिरिट्स और जो है ह्यूमंस और ऑब्जेक्ट्स में उनके लिए प्रोविज़न बना कर रखते हैं। इरूला जो है उनके हाउसेस जो हैं वो स्मॉल सेटलमेंट्स में इकट्ठे बनाए जाते हैं, और इरूला कम्युनिटी जो है वो ट्रेडिशनली आपको भी याद होगा स्नेक के जो स्नेक जो है एंटी वेनम बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। हीलिंग, ट्रेडिशनल मेडिसिन और पॉइजनस स्नेक्स को कैच करना, इस सब में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। इरूला के जो नॉलेज ऑफ स्नेक है वो बहुत ही लेजेंडरी है, स्नेक वेनम की भी। इवन इनफैक्ट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मेजर प्रोड्यूसर है एंटी स्नेक वेनम की हमारी कंट्री में, उसको जो सप्लाई होता है वेनम लगभग 80% जो है वो यही मतलब जितना भी कंट्री में एंटी वेनम सप्लाई होता है वो यही कोऑपरेटिव सोसाइटी रूलर्स की जो है वो उनको वेनम सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नासा वेब कैक ऑब्जर्वेशन इन ऑफ टाइटन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2022 और जुलाई 2023 में नासा के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है सैटर्न के लार्जेस्ट मून को, टाइटन को, यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और कैक ऑब्जर्वेटरी। टाइटन जो है वो लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, और सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में आफ्टर जुपिटर्स गैनीमीड। तो ये ओनली नोन मून है जिसका एक थिक एटमॉस्फेयर है, सरफेस लिक्विड बॉडीज़ हैं। टाइटन एग्जिबिट करता है अर्थ लाइक वेदर पैटर्न्स, जिसमें कि क्लाउड्स, रेनफॉल, सीजनल वेरिएशन सब आते हैं। और ये ऑब्जर्वेशंस हमें हाईलाइट कर रही हैं कि क्लाउड्स कैसे मिड और हाई नदर्न लैटिट्यूड्स में प्रेजेंट थे टाइटन के, और कन्वेक्शन ड्रिवन वेदर पैटर्न्स है वहाँ पर भी। तो पहला कंफर्म्ड एविडेंस हमें मिल रहा है कन्वेक्टिव क्लाउड एक्टिविटी का टाइटन के नदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये फ्रेश इनसाइट्स दे रहा है हमें टाइटन की एक्टिव मीथेन साइकिल के बारे में भी। टाइटन का वेदर जो है हमें साइंटिस्ट को हेल्प करेगा प्रीबायोटिक केमिस्ट्री और क्लाइमेट डायनामिक्स समझने में आईसी मून्स के ऊपर, जहाँ पर थिक एटमॉस्फेयर्स हैं। कैक ऑब्जर्वेटरी क्या है? ये मोना किया में लोकेटेड है, हवाई में। 10 मीटर टेलीस्कोप्स हैं यहाँ पर। 10 मीटर प्राइमरी मिरर जो है जिसमें 36 हेक्सागोनल सेगमेंट्स लगे हैं हर टेलीस्कोप में, और ये सेगमेंट जो है एडजस्ट करते हैं रियल टाइम बाय कंप्यूटर कोड कॉल्ड कंप्यूटर कंट्रोल्ड एक्चुएटर्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जयंत नार्लिकर। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एमिनेंट एस्ट्रोफिजिस्ट, पद्म विभूषण अवार्डी डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जो है वो भी रिसेंटली पास अवे हुए हैं। तो ये जयंत नार्लिकर जी वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट थे, एक ग्लोबल नेम थे थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी में। महाराष्ट्र में बॉर्न हुए, बीएससी डिग्री इन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मिली, और धीरे धीरे फिर ये कैम्ब्रिज भी गए, और बाद में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी ज्वाइन किया। प्रेसिडेंट भी रहे कॉस्मोलॉजी कमीशन के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है होयल नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी देने के लिए। पद्म विभूषण, यूनेस्को का इनको कलिंग अवार्ड फॉर साइंस पॉपुलराइजेशन, ये सब भी मिला है। अब होयल नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्या? अब ये जो है थ्योरी स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स है। ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव देती है आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को। अब ये थ्योरी कहती है कि इनर्शियल मास जो है एक पार्टिकल का डिपेंड करता है कि मास कितना फैला हुआ है यूनिवर्स में। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कह रही है कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा से और आगे भी बढ़ता रहेगा, एक्सपैंड होता रहेगा, इनफाइनाइट है वो एक्सटेंट में, कोई उसकी बिगिनिंग और एंड नहीं है। और इसने एक्नॉलेज किया इस थ्योरी ने कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहता है, लेकिन कहा कि यूनिवर्स जो है वो अपनी कांस्टेंट डेंसिटी मेंटेन कर पाता है क्योंकि वो न्यू मैटर भी क्रिएट करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन ओलिविया। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो एनुअल मिशन होता है ऑपरेशन ओलिविया से, उससे लगभग 6.98 लाख ऑलिव रिडली टर्टल्स बचाए गए हैं रिसेंटली, ये सामने आया है। तो ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड का एनुअल मिशन होता है, नवंबर से मई तक चलता है। सेफ नेस्टिंग ग्राउंड्स देता है ये ऑलिव रिडली टर्टल्स को। राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग, एरियल सर्वेलेंस, क्लोज कोऑर्डिनेशन लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ करते हैं इसमें आईसीजी, और टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस को रोका जाता है।
फिशिंग नेट्स जो है में लगाने से, ताकि टर्टल्स जो है वो मरे ना, ठीक है। और ऑलिव रिडली टर्टल्स क्या हैं? अमंग द स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ ऑफ टर्टल्स हैं ये, और मोस्ट वाइड स्प्रेड और अबंडेंट है वर्ल्ड के सी टर्टल्स में। इनका नाम मिलता है इनको ऑलिव ग्रीन कलर से, क्योंकि हार्ट शेप्ड शेल इनकी जो है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, और यूनिक मास नेस्टिंग करते हैं ये, जिसको अरीबाडा कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स जो है पैसिफिक इंडियन और अटलांटिक ओशंस में यहाँ पाए जाते हैं ये। ओडिशा की गाहिरमाथा मरीन सेंचुरी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट रूकरी है इनकी। ओमनीवोरस होते हैं, सॉलिटरी रहते हैं ये, ओपन मोशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अपनी पूरी लाइफ लगभग ये ओशन में ही बिताते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स माइग्रेट कर लेते हैं ये, ठीक है। और वल्नरेबल इनका स्टेटस है IUCN रेड लिस्ट स्टेटस। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is pandemic agreement. This topic is important for your international relations. So member states of the WHO have unanimously adopted the world's first pandemic agreement at 78th World Health Assembly. This historic decision follows over 3 years of negotiations initiated in response to the COVID pandemic. This agreement, which is fully legally binding, it aims to strengthen global preparedness, response, and equity in handling future pandemics. First of all, let's see what is World Health Assembly. It is the decision-making body of WHO. It is composed of all delegates from all WHO member states, and it meets annually to determine policies, approve budgets, and review work programs. This assembly is held at Geneva, Switzerland. It sets WHO's policies and priorities, appoints the Director General of WHO, approves the budget of WHO and work programs, etc. So, what are the notable achievements of World Health Assembly? So, it has adopted the international health regulations. It declared eradication of smallpox in 1980. It also adopted the first international health treaty called the Framework Convention on Tobacco Control. It also adopted the Pandemic Influenza Preparedness Framework, and now the WHO Pandemic Agreement, which is the second historic legal agreement post COVID-19, has also been adopted. But the adoption has been made, but the full implementation has to wait, because the key mechanisms will be finalized by May 2026, and at least ratification by 60 countries would be required for this agreement to enter into force. This is the only second international agreement after the WHO Framework Convention on Tobacco Control, which has been adopted under Article 19 of the WHO Constitution. It marks a milestone in global health governance and pandemic resilience. This agreement aims to strengthen global pandemic prevention, preparedness, and response. It also respects the sovereign rights of the states. The countries are encouraged to develop and implement national pandemic prevention plans, improve early detection and control of infectious diseases, focus on areas like routine immunization, lab safety, antimicrobial resistance, and zoonotic disease prevention. So, nations should therefore ensure equitable distribution and rapid scale up of pandemic related health products, aim for sustainable, timely, and fair access to these products during pandemics, and it is also having provisions with respect to technology and knowledge transfer during the pandemic periods. So, use of licensing, financing, and regulatory incentives also are envisioned to facilitate transfer of this knowledge. So, a new system has been created, pathogen access and benefit sharing, in which rapid sharing of pathogen data will be done with manufacturers of vaccines and diagnostic tools, or even medicines. But in return, manufacturers must provide 20% of the real-time production to WHO and 10% as donations, and rest at affordable prices. So participation will be open to all companies regardless of location, but of course a detailed mechanism will be negotiated and finalized by May 2026. A global supply chain and logistics network will be established for equitable and timely access to health products. This agreement does not grant WHO authority to impose or mandate national laws or pandemic response actions. Of course, it also does not have any legal authority to enforce such a treaty. Also, there is US absence from the agreement, which casts a long shadow over its effectiveness. So the next topic is doctrine of presumption of constitutionality. This topic is important for your polity section. So, countering the Supreme Court's observation that a parliamentary statute enjoys a presumption of constitutionality, petitioners have termed the new Waqf Act a creeping acquisition of Waqf properties owned by the Muslim community. What is the doctrine of presumption of constitutionality? It is a fundamental principle in Indian constitutional law, rooted in the respect for legislative authority and the democratic process. This doctrine posits that
legislation enacted by the parliament or state legislature is presumed to be constitutional, and the burden of proving otherwise lies on the challenger or the petitioner. This principle also assumes that laws enacted by the legislature are inherently valid and constitutional until proven otherwise. This doctrine also finds its root in the broader jurisdictional tradition, which respects the separation of powers. Okay, Supreme Court has time and again underscored this doctrine in its rulings. And this ruling or this doctrine ensures that legislative process is respected and elected representatives are also respected. The presumption is also fostering stability and predictability in the legal system. Otherwise, it will, if this doctrine is not there, then it would invite undue judicial interference in legislative matters. So the next topic is Irula tribe. This topic is important for your social issues. So in Tamil Nadu's Kunapatu, Irula families who have lived on the land for generations are facing eviction and denial of rights, as nearly half remain without legal ownership or recognition. Irula is a Dravidian ethnic group residing in Nilgiri mountains of Western Ghats, spread across Tamil Nadu and Kerala. They are one of India's oldest indigenous communities. They are classified under the PVTG category in Tamil Nadu. They do not have any definite god for them. They are pantheists who make provision for the presence of spirits in humans and objects. Irula houses are built together in small settlements or villages called motas, and they are traditionally associated with healing, traditional medicine, and catching poisonous snakes. Their knowledge of snakes and snake venom is legendary. In fact, a cooperative society exists which is a major producer of anti-snake venom in the country, and this Irula's cooperative society supplies almost 80% of the venom which goes into making anti-venom in the country. So the next topic is NASA Webb Keck observation of Titan. This topic is important for your science and tech section. In November 2022 and July 2023, NASA scientists have observed Saturn's largest moon called Titan using both the James Webb Space Telescope and the Keck Observatory. Titan is the largest moon of Saturn and the second largest moon in the solar system after Jupiter's Ganymede. It is the only known moon with a thick atmosphere and surface liquid bodies, including lakes and seas of methane and ethane. Titan exhibits Earth-like weather patterns, including clouds, rainfall, and seasonal variations. These observations have also revealed the presence of clouds in the mid and high northern latitudes, indicating convection-driven weather patterns there. This also marks the first ever confirmed evidence of convective cloud activity in Titan's northern hemisphere. It also offers fresh insights into Titan's active methane cycle. It will help scientists to better comprehend prebiotic chemistry and climate dynamics of icy moons with thick atmospheres. What is the Keck Observatory? It is located near the summit of Mauna Kea in Hawaii. It consists of two 10-meter telescopes. Each of them has a 10-meter primary mirror composed of 36 hexagonal segments, and they are controlled in real time by computer-controlled actuators. So the next topic is Jayant Narlikar. This topic is important for your science and tech section. So eminent astrophysicist and Padma Vibhushan awardee Dr. Jayant Vishnu Narlikar passed away recently in Pune. He was one of India's most distinguished astrophysicists and a global name in theoretical cosmology. He was born in 1938 in Kolhapur, Maharashtra. He earned his BSc degree from Banaras Hindu University. Later, he went on to join the Cambridge University. After returning to India, he joined the Tata Institute of Fundamental Research in 1972. He also served as the president of Cosmology Commission of the International Astronomical Union, and he is best known for co-developing the Hoyle-Narlikar theory of gravity, which is an alternative to Einstein's general theory of relativity. He received the Padma Vibhushan and also the UNESCO award, Kalinga Award for Science Popularization. What is this Hoyle-Narlikar theory of gravity? So it is a steady state theory of universe which proposes that the inertial mass of a particle depends upon the distribution of mass across the universe, and this theory maintains that universe has always been and would continue to be the way it is, which means it is infinite in extent without a beginning or an end. This theory acknowledged that this theory has acknowledged that the universe is expanding, but said that this universe was able to maintain a constant density by continuously creating new matter. Okay. So the next topic is Operation Olivia. This topic is important for your environment section. Indian Coast Guard's annual mission Operation Olivia has helped protect a record of over 6.98 lakh olive ridley turtles nestled at the Rushikulia river mouth in Odisha.
So it is an important initiative of Indian Coast Guard conducted annually between November to May. The aim is to ensure safe nesting grounds for olive ridley turtles, particularly at Gahirmatha Beach and surrounding coastal areas of Odisha. The operation involves round-the-clock patrolling, aerial surveillance, and close coordination with local stakeholders. Apart from enforcement, Coast Guard also actively collaborates with coastal communities, promoting the use of turtle excluder devices in fishing nets and signing MOUs with NGOs to support conservation, education, and sustainable fishing practices. So olive ridley turtles are the species of turtles among which is the smallest, but most widespread and abundant in the abundant. It it gets its name from the olive green color of its heart-shaped shell. It is known for their unique. They are known for their unique mass nesting called aribada. They are found throughout the world, primarily in the tropical regions of the Pacific, Indian, and Atlantic Oceans. And Odisha's Gahirmatha Marine Sanctuary is known as the world's largest rookery of sea turtles. Okay, they are omnivores. They are solitary. They prefer basically open ocean. These turtles spend their entire lives in the ocean and migrate thousands of kilometers between feeding and mating grounds in the course of a year. Their IUCN red list status is vulnerable. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.